Good afternoon, guys. So today's topic is basically the anemia, and after completion of the anemia, I will discuss with you some special topic that is related to your pathology syllabus. But the different terminologies you get here, it will be help in the syllabus of the physiology in first prop. Okay. The topic anemia, it is important because in university exam you will get anemia as a short question that carries the 5 marks, or in the parts of the SLQ it may be the parts of the long questions also. So the topic is very important, and the topic is anemia. Okay. And it is included in your blood vascular chapter in physiology. Okay. সো তোদেরকে একটা কথা বলবো যে একটাই কথা, মানে ডিফারেন্ট মেডিকেল নিউ টার্মিনোলজিস তোরা এনকাউন্টার করবি প্রথম প্রথম কলেজে এসে, ঠিক আছে? তো সেই টার্মিনোলজিগুলোকে তোদেরকে প্রথমে বুঝতে হবে, শুধু বুঝতে হবে সেটা না, তার ইনার মিনিংগুলোকে তোদেরকে বুঝতে হবে। ওকে, যেমন ধর ট্যাকিপেনিয়া, ওকে, ট্যাকিকার্ডিয়া, ব্র্যাডিকার্ডিয়া ট্যাকিকার্ডিয়া তোরা পড়ে এসছিস, নিট ইউজি সিলেবাসে ছিল। বা ট্যাকিপেনিয়া, ডিসপেনিয়া, নেক্সট হচ্ছে তোর কার্ডিওজেনিক রিফ্লেক্স, নিউরোজেনিক রিফ্লেক্স, প্যারাসিম্প্যাথেটিক টোন, এলওসি, এই টার্মগুলো তোদেরকে কিন্তু বুঝতে হবে, এবং এগুলো মানে শোনার সঙ্গে সঙ্গে মাথায় যেন চলে যে মানে কী বোঝাতে চাইছে বা কী হচ্ছে। ওকে, তো স্টার্ট উইথ দ্য অ্যানিমিয়া। ওকে, সো বেসিক পার্ট দ্যাট ইজ দ্য অ্যানিমিয়া, তোরা ছোটোবেলার থেকে সবাই জানিস, ঠিক আছে? এভরিওয়ান ইউ হ্যাভ এ স্মল নলেজ অ্যাবাউট অ্যানিমিয়া। সো হোয়াট ইজ অ্যানিমিয়া? So if the examiner questions or asks you in the grand viva the definition of the anemia, then you have to say it in this process. Okay, the anemia is the denaturations of the RBC and as well as also the hemoglobin. Okay, RBC का decrease and hemoglobin का decrease, ये दोनों भी हो सकता है, ठीक? और इन दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट हो तब भी हम इस कंडीशन को एनीमिया बोल देंगे, ठीक है? So therefore anemia is the quantitative or qualitative diminutions of the hemoglobin or RBC, or both in respect to the age, sex and individuals. Okay, so the net effect is the failure in transport of adequate amount of the oxygen of the tissues. So tissue में oxygen नहीं जाएगा anemia में, ठीक है? So therefore different types of the anemia. First, okay, that is the major type, there is a normocytic anemia. Normo means the decretion, ठीक है? Next there is the macrocytic anemia. Macro means increase in size, that is called the macrocytic anemia. And next one that is the type is the macrocytic anemia, and next one that is the microcytic anemia. Okay, that is the microcytic anemia. Okay, next other types of anemia is the congenital anemia, congenital hemolytic anemia, pernicious anemia, sickle cell anemia, anemia during pregnancy, neonatal anemia that is caused in children is very common case. Okay, so therefore I first encounter with the normocytic anemia. Before telling that is about the normocytic anemia, any blood vascular disease, যে কোনো blood vascular diseaseর নাম always ends with mia, ঠিক? That is the polycythemia. Example, polycythemia means the mia terms is related to the blood vascular disease. Okay, leukemia, that is ends with the mia. Okay, so anemia, that is the mia terms. Always when you find the mia related disease, it is comes here to your mind, that is the blood vascular disease. Okay, so therefore it is a normocytic anemia. Normocytic anemia's morphology of the RBC is normal. RBC morphology কেমন হয় তোরা জানিস, 7.2 millimicron, and it is the biconcave shaped. Okay, and decrease in Hb%. So therefore morphology of RBC remains normal, but the RBC में जो hemoglobin contents रहता है वो decrease हो जाता है, ठीक? Less erythropoiesis. The term erythropoiesis here, it means the formation of the red blood cell. Erythropoiesis. Okay, so less erythropoiesis, that is the RBC formation will be less. Bone marrow depressions, as you know that the RBC develops from the bone marrow. Okay, so bone marrow depression is the cause of the normocytic anemia. And next, that is our findings: MCH, mean corpuscular hemoglobin, mean corpuscular hemoglobin concentration, MCHC, MCV, mean corpuscular volume, and PCV, peak cell volume, and hemoglobin percentage
level lower than the normal. So that will be the findings, and I will come one by one what is the MCH, MCHC, MCB, PCB in the later phase of this lecture. Okay, so one more, that is a normocytic anemia. Morphology of the RBC remains normal. Okay, decrease in hemoglobin percentage, less erythropoiesis, that is the RBC formation, bone marrow depression, and the MCH, MCHC, MCB, PCB and hemoglobin percentage level lower than the normal. Okay, so first we come, that is the what is the MCH. Okay, MCH is the mean corpuscular hemoglobin. So MCH full term is the mean corpuscular hemoglobin. It is the amount of the average hemoglobin in each blood cell. each blood cell के अंदर कितना hemoglobin रहता है ये define करता है MCH. So mean corpuscular hemoglobin. So therefore it is the amount of the hemoglobin in each blood cells. Okay, so next we encounter with the MCHC. MCHC is the concentration of the hemoglobin in each blood cells. Concentration of hemoglobin in each blood cells. इन ब्लड मतलब एक ब्लड सेल के अंदर कितनी हीमोग्लोबिन रहता है ये डिफाइन करेगा हमारा MCHC. ओके, नेक्स्ट दैट इज द MCB. MCB टेस्ट मीन्स it is a mean corpuscular volume. Mean corpuscular volume determines the average, sorry, MCB means the mean corpuscular volume determines the average volume of the RBC. Okay, next one, there is the PCB. PCB means the peak cell volume. Peak cell volume. One RBC cell contain how many oxygen? एक RBC cell कितना ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है ये पता करने के लिए हमको पीसीबी टेस्ट करवाना पड़ता है. ठीक, ओके. So I am coming to the next type of anemia, that is the macrocytic anemia. Macro means size increase than the normal. Macro, that is the term used, it is the macro. Okay, it is the macro. So therefore erythrocytes larger than the normal. Erythrocytes means the RBC cells. When the RBC cells increase larger in number, then it is called as the macrocytic anemia. Okay, basically it is seen in the deficiency of the vitamin B12 and the folic acid. So विटामिन B12 बॉडी में जब विटामिन B12 एंड द फॉलिक एसिड का डिक्रीज होता है तब हमको वन टाइप ऑफ एनीमिया पेशेंट में encounter the one type of anemia, that is the macrocytic anemia. So here is the explain why questions come to in your mind, that is why the deficiency of the vitamin B12 and folic acid leads to macrocytic anemia. So therefore here we have to explain the role of the vitamin B12 and the folic acid in macrocytic anemia. So what is the role of the vitamin B12 and the folic acid in our body? It helps in the DNA synthesis of the RBC. So DNA synthesis क्यों करता है? DNA synthesis करता है कि सेल का इलोंगेशन करने के लिए, सेल का साइज बढ़ाने के लिए. ठीक, सो जब विटामिन B12 और सेल डिवीजन करने के लिए, सेल को बड़ा सेल को छोटा करने के लिए. ठीक, सो देयरफॉर बेसिकली seen in deficiency of vitamin B12 and folic acid. So function of the folic acid and vitamin B12 I have told to you, that is the DNA synthesis. When DNA synthesis is not done, the cells becomes larger and larger. ठीक है, ultimately the cells death will occur, that is called as the apoptosis or the necrosis. It is the accidentally cell damage, so we term it as the necrosis. Okay, so explain my question, that is comes why the vitamin B12 and the folic acid deficiency leads to the macrocytic anemia. Okay, next another feature of the macrocytic anemia is the MCH becomes higher. So MCH क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जब रेड सेल का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, रेड सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो रहता है वो भी इंक्रीज कर जाएगा. ये तो जनरल है, कोई बात नहीं. So therefore it is also called the megaloblastic anemia. So here is the another explain why question you have to encounter, that is the why macrocytic anemia is called the megaloblastic anemia, because RBC forming erythroblast in bone marrow are large in size. So RBC forming erythroblast in bone marrow are large in size in macrocytic anemia. So it is called the megaloblastic anemia also. Okay, next type of anemia, that is the microcytic anemia. Micro means the small. Micro means the small. Okay, so here the RBC are small than the normal size, and it is basically caused due to the chronic iron deficiency. बॉडी में chronic iron deficiency हो जाए तो macrocytic anemia हो सकता है. ठीक है, so MCH, MCHC, PCB, MCB and HbP percentage become low. Okay, then that is the other types of anemia. Other types of anemia means congenital hemolytic anemia. Congenital hemolytic anemia, the term I have
utter in many times because the term is very important. Congenital hemolytic anemia. Congenital means from the since of the birth से ही इसका एनीमिया का एक टेंडेंसी आएगा, ठीक है. hemolytic means lysis माने ब्रेक डाउन, ठीक है. hemolytic anemia, hemolytic means heme means the hemoglobin cells. So congenital hemolytic anemia, it is the breakdown of the RBC since the birth. Okay, it is basically due to the genetic disorder. Okay, next there is the pernicious anemia. Pernicious anemia is also a special type of macrocytic anemia produced due to the lack of the absorption of the vitamin B12 in the एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है. एट्रोपिक गैस्ट्राइटिस के कारण में सेल में विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का एब्जॉर्प्शन स्लो हो जाता है. उसके लिए क्या होता है, पर्निशियस एनीमिया इंक्लूड होता है अदर टाइप्स ऑफ एनीमिया के अंदर में, ठीक है. नेक्स्ट वन देयर इज अ सिकल सेल एनीमिया. यू हैव ऑलरेडी नो अबाउट दिस सिकल सेल एनीमिया इन योर नीट यूजी सिलेबस. इट विल you have encountered it. So next one, that is the anemia during pregnancy के time. It is basically the physiological anemia, you also may say. So during pregnancy time the mother RBC counts may be lower than the normal. Okay, due to there are two types of circulations in the pregnant mother occur. That is, one is the fetal circulations and one is the mother physiological circulations. So therefore during some pregnancy any patients may encounter, that is the anemia during the pregnancy. Okay, and next one causes is the neonatal anemia. Neonatal anemia is very common. Neonates means the child anemia में anemia जब तुम आउटडोर में जाओगे और पेशेंट देखोगे तो देयर आर सो मेनी केसेस ऑफ द neonatal anemia. न्यू वन हुआ है, न्यू वन का उसके साथ 2 दिन की 3 दिन बर्थ का 2 दिन की 3 दिन के अंदर उसका एनीमिया एनकाउंटर कर गया. सो देयरफॉर दिस केस इज ऑल्सो कॉल्ड द नियोनाटल एनीमिया. ओके, नेक्स्ट आफ्टर so in a short, that is the types of anemia. There is the normocytic anemia, macrocytic anemia, microcytic anemia, and next one, that is the other types of the anemia. Okay, next I am coming to the confirmatory test or the pathological test or the biochemical test by a doctor to confirm that is the patient is suffering from the anemia. Okay, the major test of the anemia is basic test is the hemoglobin percentage test. Okay, so the normal value of the hemoglobin in adult male, it is the 12 to 16 gram per dl. So very important term is, that is the 12 to 16 सबको याद रहता है, लेकिन लोग गलती करते हैं ग्रैंड भाई के टाइम. दैट इज द ग्राम पर डीएल. ये जो तुम नहीं बोलोगे ना, मार्क्स नहीं मिलेगा बॉस. ओके, so therefore hemoglobin test is the basic confirmatory test for the anemia and the normal value is 12 to 16 gram per dl male adult. next female के लिए क्या होगा normal value 11 to 15 gram per dl female adult. okay, next neonates और the child के लिए क्या होगा, that is the 11 to 13 gram per dl. और the aged individual के लिए होगा 10 to 12 gram per dl. ठीक है. नेक्स्ट MCSC टेस्ट. MCSC टेस्ट का MCSC का वैल्यू कितना होगा, 33 to 36 ग्राम पर DL. PCV टेस्ट पिक्सल वॉल्यूम का वैल्यू कितना होगा, जनरल वैल्यू और द नॉर्मल वैल्यू, दैट इज 0.42. ठीक है, वो ब्रैकेट में जो लिखा है वो पार्ट्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री. मतलब PCV टेस्ट इज इंक्लूडेड इन द बायोकेमिस्ट्री सिलेबस. ओके, सो आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल्स about this unit. okay, 2.5 to 9.7% is interval 0.36 to 48. it is your biochemistry syllabus. If I am entering to it, there will be the lecture will be the much lengthy. okay, so next, that is the MCH test. MCH test general value is also 32 to 35 gram per dl. okay, so now I am coming to the treatment process. Treatment is basically the administration of the ferric ascorbate and zinc sulfate tablets. ठीक है. So there are therefore many brands in the market. It is Zincovid is there. Next there is the ferrogen tablets. So it is a basic treatment. okay, लेकिन if hemoglobin percentage is less than 7 to 8 ग्राम पर DL, एक इंडिविजुअल है, एक पेशेंट है, आप उसका टेस्ट का रिजल्ट आया है, हीमोग्लोबिन परसेंटेज 7 और 8 ग्राम पर DL से कम गया और घट गया. ठीक है, देन इट इज़ नीड टू बी ब्लड ट्रांसफ्यूशंस. ओके, जब 7 to 8 ग्राम पर DL से पेशेंट का हीमोग्लोबिन परसेंटेज घट जाएगा, तब हमको ब्लड ट्रांसफ्यूशन मेथड को एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. ठीक,
and therefore it is a very basic question is asked in your grand viva in physiology clinical practical. The amount of the 1 unit blood, the amount of the 1 unit blood is 5 to 5 ml. Never forget it, because it is most frequently asked question during your clinical physiology exam, practical exam. Okay, so in a nutshell, what is the anemia? Anemia is the diminutions of the RBC and hemoglobin, or both, in without in with respect to the sex, age, and the individual. Okay, so therefore different types of the anemia, then that is the normocytic anemia, that is morphology of RBC remains normal and the decrease of the hemoglobin percentage, less RBC formation, there is the less erythropoiesis. Next bone marrow depressions, and next that is MCH, MCAC, MCB, PCB, and hemoglobin percentage level lowers. Okay, next type of anemia, that is the macrocytic anemia. Macro means the large, erythrocyte larger than the normal. Basically it is seen the deficiency of the vitamin B12 and the folic acid, the role of the vitamin B12 and the folic acid. Okay, MCH becomes higher, also called the megaloblastic anemia, because RBC forming erythroblast in bone marrow are large in size. Next, that is the RBC, or this then next type of anemia is the microcytic anemia, that is RBC are smaller than the normal size, and it is seen due to chronic iron deficiency. MCH and MCHC, PCB, MCB, and hemoglobin percentage becomes lower. And there is the other types of anemia, that is the congenital hemolytic anemia, pernicious anemia, sickle cell anemia, ammonia during pregnancy, and the neonatal anemia. Okay, so now I am coming to the next topic, that is the comparison of the different kinds of shock. ঠিক আছে, so first, different kinds of shocks. Okay, so basically the what is the if teacher asks you the what is the shock means, shocks means the when a tissue is deprived from the blood flow from your blood vascular or the systematic circulation, then the body sorry, so definition of shock: when a tissue or the cell is deprived of the flow of the blood from the systematic circulations, then it lead to a condition, or the life threatening condition is called as the shock. Okay, next, the types of the shock may be the hypovolumic. The term is very important here. I have বারবার করে বলছি যে এই যে টার্মগুলো, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে দেখ, এই হাইপোভলিউমিক, কার্ডিওজেনিক, নিউরোজেনিক, অ্যানাফাইলেকটিক, সেপটিক, এই যে টার্মগুলো, এক্সট্রিমলি সরি, এই যে টার্মগুলো যেগুলো আছে না, এগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে এগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে যেন মাথায় খেলতে শুরু করে, মানে কী বোঝাতে চাইছে, মানে ইনার মিনিংটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেंट। ओके, इसका जो इनर मीनिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो देयरफॉर व्हाट इज द हाइपोवॉल्यूमिक? हाइपोवॉल्यूमिक मीन्स बॉडी फ्लूइड्स का डिक्रीजन ऑफ द बॉडी फ्लूइड्स, दैट्स मे बी द डिक्रीजन ऑफ द ब्लड और डिक्रीजन ऑफ द वाटर एक्सेट्रा, डिक्रीजन ऑफ द बाइल एक्सेट्रा, gastric juice. So what is the hypovolumic? Hypovolumic is the decretion of the body fluids. Okay, so the clinical features of the patient, it is the hypotension. Hypotension means decrease of the blood pressure. Decrease of the blood pressure means normal blood pressure is of an individual 120 systolic blood pressure, and diastolic blood pressure is 80. This is a normal value, mm of Hg. So हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के टाइम में क्लिनिकल फीचर्स ऑफ पेशेंट क्या होगा? हाइपोटेंशन हो जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, वीक थ्रेडी पल्स, मॉइस्ट स्किन। वीक थ्रेडी पल्स मीन्स द पल्स रेट एट रेडियल आर्टारी पल्स উইল বি ভেরি উইক, ঠিক আছে, পালস রেটটা খুব আস্তে পাবো, ঠিক আছে। নেক্সট যে ডিফারেন্স, যেহেতু এখানে যেহেতু ডিফারেন্স নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, ডিফারেন্ট টাইপস অফ শকস, so therefore decrease CO means cardiac output. You all know about the cardiac output, that is in your NEET UG syllabus. I am not going to the details about cardiac output because it is a long topic in your cardiovascular system. So decreased cardiac output, increased SVR. SVR means the systematic vascular resistance. It is a very, very important term in your medical terminology.
So increased SVR. Increased SVR means systematic vascular resistance. वो क्या होता है? जब ब्लड फ्लो होता है वेसल्स के अंदर, सॉरी, सो SVR क्या होता है? SVR इज द डिक्रीज सिस्टेमेटिक vascular resistance. Systematic vascular resistance means the resistance created by the blood vessels against the flow of the blood. ब्लड के फ्लो की अगेंस्ट में जो आर्टेरियोल्स, वेनस प्लेक्सस जो रेजिस्टेंस खड़ा करते हैं उसको हम बोलते हैं SVR, दैट इज द सिस्टेमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस. ओके, सो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक, clinical features: hypotension, tachycardia. That is, tachycardia means the increase of the heart rate. The normal heart rate is 60 to 90 beats per minute. सब 90 100 और सो देयरफॉर इंक्रीज इन हार्ट बीट, दैट इज 90 बीट्स पर मिनट के ऊपर में जब हार्ट बीट चला जाएगा, देन कंडीशन इज कॉल्ड एज द टैकीकार्डिया. हमको उसको क्या डिफाइन करना पड़ेगा? द कंडीशन इज द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द टैकीकार्डिया. ओके, नेक्स्ट होচ্ছে वीक थ्रेडी पल्स, मॉइस्ट स्किन. स्किन जो है मॉइस्ट हो जाएगा. एंड वी कैन डिफरेंशिएट ऑफ द हाइपोवॉल्यूमिक शॉक्स फ्रॉम अनदर शॉक्स, दैट इज द डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज कर जाएगा. इंक्रीज SVR, दैट इज द सिस्टेमेटिक वास्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा. ठीक, नेक्स्ट टाइप ऑफ शॉक दैट इज योर वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द कार्डियोजेनिक शॉक. सो कार्डियोजेनिक मीन्स कार्डियो रिलेटेड. ओके, the term is very important, that is the cardiogenic means it can be the heart failure, okay, angina pectoris, myocardial infarction, cardiac tamponade, एंडोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस एक्सेट्रा. कार्डियो मतलब कि कार्डियो डिजॉर्डर. ठीक है, कार्डियो डिजॉर्डर के टाइम में जब जो शॉक आएगा उसको कहते हैं हम कार्डियोजेनिक शॉक. ठीक है, तो এটা কি হতে পারে? দ্যাট ইজ দ্য হাইপোটেনশন হয়, ট্যাকিকার্ডিয়া হয়, ময়েস্ট স্কিন হয়, অ্যান্ড ট্যাকিপনিয়া হয়. ট্যাকিপনিয়া ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট. এনি টার্মস এন্ডস উইথ দ্য নিয়া, ঠিক, ইট ইজ রিলেটেড টু দ্য योर thoracic cavity or related to the lung disorder or the lung disorder. ठीक, so therefore tachypnea means the irritation during breathing, restless breathing, that is called as the tachypnea. Okay, so cardiogenic shock clinical features is the hypotension, tachycardia, moist skin, and the tachypnea. And decrease CO, that is the cardiac output decrease कर जाएगा, and increase systemic vascular resistance. As I mentioned, it is similar to the hypovolemic shock, that is the decrease in cardiac output, increase in SVR. Okay, next type of shock is very important, that is the neurogenic. So therefore term is very important, another term, that is the neurogenic. Neurogenic means it is related to the neurons or the nervous system. Okay, nervous system in your body. It may be the nervous system disorder, that is the upper motor lesion, that is lower motor lesion. Okay, so न्यूरोजेनिक में क्या होगा? हाइपोटेंशन होगा, ब्रैडिकार्डिया होगा, वार्म ड्राई स्किन होगा. ब्रैडिकार्डिया मीन्स यू नो ऑल, दैट इज अ डिक्रीज इन हार्ट बीट जब नॉर्मल वैल्यू से डिक्रीज हो जाता है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज द ब्रैडिकार्डिया. सो न्यूरोजेनिक शॉक एंड डिक्रीज कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा. वेनस एंड आर्टेरियल वासोडाइलेशंस एंड द लॉस ऑफ द सिंपैथेटिक टोन, very important term. So therefore venous and the arterial vasodilations, that is the arterial wall or the artery or the venous channel will be dilated, so therefore pressure will be less. so जब प्रेशर लेस हो जाएगा वॉल्यूम बढ़ जाएगा. ठीक है ना, सो देयरफॉर डिक्रीज इन कार्डियक आउटपुट. सो लॉस ऑफ सिंपैथेटिक टोन्स मतलब मसल में दो टोन होता है, एक होता है सिंपैथेटिक टोन एंड अनदर होता है पैरासिम्पैथेटिक टोन्स. ठीक है, तो मसल का जो सिंपैथेटिक टोन है वो डिक्रीज कर जाता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, दैट इज द anaphylactic shock. Anaphylactic shock, you have already known about this term. I think it is your NEET UG syllabus. Anaphylactic shock, when you administer an antibiotic in your patient, then therefore in many kinds of infection may occur, that is related to the anaphylactic shock. Clinical features is hypotension, tachycardia, cough, dyspnea. So therefore what is the dyspnea? Next, that is the pinia terms means it is related to the lung disorder. Dyspnea means complete
डिसऑर्डर इन ब्रीदिंग, मतलब कि ब्रीदिंग लेने के लिए पेशेंट को बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, ठीक है। टैकिपनिया मीन्स द रेस्टलेस ब्रीदिंग, और डिस्पिनिया मीन्स irritability during the breathing. Okay, next is the restlessness. It is the decreased LOC means loss of consciousness. Okay, and the features is the decreased CO, decreased SVR. Okay, next type of shock is the septic shock. Septic means the infections occurs, and then infection is traveling to your whole body through the blood. Okay, this is called the septic shock. Clinical features, that is the hypotension, tachycardia, tachypnea, and the fever. And here it is the decreased cardiac output and the decreased systemic vascular resistance. Okay, so the treatment of the different kinds of shock, or the basic treatment क्या होता है, IV fluid administrations, ठीक है। 0.9 NS and RL देबो पेशेंट के, ठीक है। and different kinds of the drugs, though the drugs is not in your physiology syllabus, so it is deal with your pharmacology, so I am not going to the details. Okay, so here I am to the end of this demo class, and if any questions regarding the anemia or the different kinds of the shock, you can inform me in your group. Okay, next physiology demo class will be, I think it will on be the ECG basic terminology, ঠিক আছে। তারপরে নোমেনক্লেচার অফ ডিসিজি, তারপরে কিছু ক্লিনিক্যাল কেসেস থাকবে, এটা নিয়ে একটু ডিসকাশন করব, ঠিক আছে। আমাদের মানে পুরোপুরি যখন জানুয়ারি থেকে ক্লাস হবে, তারপর থেকে আমরা হয়তো একটা সেপারেট একটা অ্যাপ করব, ঠিক আছে, তোদের ক্লাসের জন্য, বা অথবা হয়তো আর রেকর্ডেড ভিডিওটা তোরা আরও ক্লাসিফাইড হয়তো তোরা পাবি, ঠিক আছে। সুতরাং প্যানিক করবি না, মানে প্যানিক করার কোনো ব্যাপার নেই, ঠিক আছে। যখন যেটা হবে জানিয়ে দেওয়া হবে গ্রুপে। আর তোদেরকে বইয়ের ব্যাপারে তো বলা হয়েছে গ্রুপে যে কোন কোন বই কিনবি। তো প্র্যাকটিক্যালের জন্য একটা বই আছে খুবই ভালো, মানে ফিজিওলজি প্র্যাকটিক্যালের জন্য অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল যে কোনটা নেব বা না নেব। প্র্যাকটিক্যাল ফিজিওলজির জন্য একে জয়েন বইটা খুব ভালো, ওটা তোরা কিনতে পারিস, ঠিক আছে। আর একটা বই আছে তোদের সিএল গাইড একটু লার্জ, মানে একটু বড়, মানে লেখাগুলো একটু বড় বড় আছে, ঠিক আছে। তো এই দুটো বই প্র্যাকটিক্যাল ফিজিওলজির জন্য খুব ভালো, ঠিক আছে। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের জন্য এইটুকু। পরের দিন, মানে পরের ডেমো ক্লাস কবে কী হবে আমি পরের গ্রুপে জানিয়ে দেবো। ওকে, থ্যাংক ইউ।